Chandan, there is a kind of sound coming from your place. I don't know what it is. Just a moment. Please, you please take care of that. So we'll be starting now, okay? Good morning and welcome to today's session on entrepreneurial journey, social challenges as opportunity. As you know, the NCID is organizing a weekly 1 hour Facebook Live and YouTube Live session on innovation, entrepreneurship, and startup for IGNOU students and faculty, covering different aspects of innovation, entrepreneurship, and startup. The program aims at encouraging and motivating IGNOU students towards innovation, entrepreneurship, and startup. The 31st session in the series, titled Entrepreneurial Journey, Social Challenges and Opportunity, is being organized today. To deliberate on this interesting topic, we have with us our resource person, Mr. Chandan Kumar. Mr. Chandan Kumar is the founder director of the startup named Craft Your Career Educations Private Limited, a center of counseling and training. He holds a degree in BSc Physical Science from Sri Aurobindo College, Delhi University, and in MA in Psychology with specialization in counseling psychology from Indira Gandhi National Open University. He is pursuing PhD in psychology. Mr. Chandan has more than 8 years of experience in the field of career counseling, career assessment, psychometric testing, career workshops, and trainings. He has counseled more than 5,000 students via workshops, individual career counseling, and psychometric testing, and already trained more than 250 counseling and training professionals. Further, he has been conducting workshops, psychometric testing in various schools and colleges. He has been a member board of studies of educational institutions and member of other organizations. Mr. Chandan Kumar is a winner of many awards. Recently, his startup, Craft Your Career Educations Private Limited, was recognized as Innovative Startup of India 2021 by Winners Creator. I welcome you, Chandan, to today's session. Before I invite you to give your talk, I would request Dr. O.P. Sharma, Director NCID, to say a few words, please. Dr. Sharma. Thank you, Dr. Momita, and good morning to all, and particularly to Mr. Chandan. I welcome you. And as you know, the purpose of this series is to motivate and inspire our students towards innovation, entrepreneurship, and startup. And nothing can be better than today's program when a IGNOU student itself, a successful startup, is motivating and inspiring by his own journey. So I think it should be a very good lecture for all the fellow students of IGNOU who may be inspired by Chandan's journey, how he started his entrepreneurial journey, what kind of challenges he faced, and in fact, how he converted those challenges into opportunity. That is the thing to learn from him. And I know him that he has been very active entrepreneur, doing every time very new things. I have been following up on LinkedIn and other social media also. I see every day he is doing something new. This is certainly, Mr. Chandan, a matter of pride for all of us, all IGNOU faculty and fraternity, that IGNOU students are doing so wonderful, and then you are paving the way for others also that they can do the similar kind of things in their field, provided they have interest in doing something. And I know what kind of problems were being faced by you and your startup, and how you have converted those all challenges, problems into opportunity, and then made it very successful kind of thing. Many people are coming to join up that company to take benefit of that. So these all things I think will be very motivating and inspiring for all of us. So we are really thankful to you, and then keep on motivating our students by way of your everyday
that whatever you are doing in this direction. So welcome you again and welcome all the participants. So we can now start, Dr. Momita, today's session. Thank you, Dr. Sharma. Now I would invite Mr. Chandan to present his talk. Mr. Chandan. Well, thank you so much, Momita ma'am, OP sir, and of course NCID team. Like you all engaged so well throughout the session to motivate your students, to motivate budding entrepreneurs as well, and really you guys are really inspiration for many people like me. And it's my pleasure, like to whom I always like I regard, to whom I inspired from you guys. And today I am in front of you to speak something, so this is really pleasure for me. And this is proud moment for me as well. And of course, being an entrepreneur, lots of challenges came during these 2 years and 3 years. Like we are living into a particular country. हम जिस country में रहते हैं, this is service prone country, जहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं तो सर्विसेज पे करते हैं कि आप अपने लाइफ सिक्योर्ड पहले कीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा. दिस इज द काइंड ऑफ कंट्री वी आर लिविंग इनटू. And there is a nothing different story with me also. Same thing happened, and we like I gone through a same kind of phases, same kind of challenges, but those challenges never stopped me. And what happened, even मैंने अभी अपने एंटरप्रेन्योरल जर्नी में या फिर अपने एकेडमिक टाइम में, अपने जॉब के टाइम में, आई हैव सीन सो मेनी पीपल like they have lots of thought process, they have lots of innovative ideas, but वो केवल माइंड में ही रह जाता है, वो केवल माइंड में ही दम तोड़ देता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. they do keep planning कि अब होगा अब होगा अब होगा, और होते होते वो कभी नहीं होता है. And this is what the main reason behind India, कि we are lacking behind startups, and we are lacking behind we are lacking behind developing good entrepreneurs. This is what the reason, because of we are living into service prone country, जहाँ सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि आप अपना लाइफ सिक्योर्ड करो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, या फिर वॉट एवर यू शुड सिक्योर योर जॉब्स, अपने लाइफ को सिक्योर करो. एंड वी continuously focused on family building, we continuously focused on family securities and all. सपोर्ट सिस्टम बहुत कम होता है. एंड ऑफ कोर्स यदि आप कुछ करने की यदि जिद आपके अंदर है, तो यू हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू. बहुत सारे रियल टाइम चैलेंजेस हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रोसेस को गो थ्रू करते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस को फेस करते हैं, and still we don't have an answer for those situations, those challenges. Then why not we should start something to counter those challenges and issues. This is what the entrepreneur said. This is what something you should start for your own self. यही से हम लोग, यहीं से कोई भी स्टार्ट करता है. मार्केट में आज के टाइम में हर एक चीज का, हर एक प्रोसेस का, हर एक डोमेन का, हर एक फील्ड में बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं. बट व्हाट यू आर गिविंग डिफरेंटली, what you are giving differently to this particular market with your own thought process, with your own process to think different. सिंपल सा एग्जाम्पल है, मार्केट में फिलिप्स भी था, एलजी भी थी, सैमसंग भी थी, बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में थे. बट सडनली मार्केट में एक इंडियन एंटरप्रेन्योर आया बोट को लेके, एंड उसने मार्केट में पूरा ऐसा तहलका मचाया कि नाउ डेज बोट इज अ बिग ब्रांड इन देयर ओन डोमेन इंस्टेड ऑफ बिग प्लेयर्स ऑलरेडी इन टू दिस पर्टिकुलर मार्केट. वाई? बिकॉज he pinpoint a particular thing, he innovated many things in his product. और आज के टाइम में बोट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट
company in their own domain, in their own industry, in their own field. So very important thing is that कि हम पहले ये सोच लें कि मेरे से होगा या नहीं होगा, मार्केट में मैं सक्सेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरी कंपनी रन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. ये सारे जो थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में सबसे पहले आते हैं, these are the actual barrier for any particular thing, any particular startup, any particular decision. So that's the reason I opted this particular topic, social challenges, as an opportunity. So, and of course my organization is also related to social work as well, social, and it is related to social work, education, counseling, and various other things. So of course we have gone through lots of social challenges in my phase as well, and I must say, like, none of other individual, हम सब उस फेज से कहीं ना कहीं गुजरे हैं और वो उस चैलेंजेस को हमने फेस किया है. जब हम बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे लाइक वी हैव टू फुलफिल पेरेंट्स ड्रीम कि आपको कौन सा करियर चूज करना है, उसके थ्रू आपको बहुत सारे उस चक्कर में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने होते हैं. एंड देन समटाइम्स हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग ग्रेजुएशंस में जाते हैं, मास्टर्स में जाते हैं, देन फिर जॉब में जाते हैं, देन वी feel ki what kind of pressure we are feeling into. And trust me, I counseled more than 5,000 students and professionals till today. Among them, 60 to 70% students and professionals, those are graduate or in graduation and above. Why? Because the kind of societal structure we have, ki they are not opting their own they are not opting their subjects, their field of interest through their own choice, through with the help of their own interest, personality and aptitudes, likewise नहीं करते हैं. Then another thing is that कि हम लोग जब आगे प्रोसेस करते हैं, देन फिर हम लोग उस हीट को फील करते हैं कि what's happening with me, why I am not able to succeed in my life. तो जब ये सारे प्रोसेस जब ये सारे प्रॉब्लम्स हमें फील होते हैं, जब ये सारे हमें दिक्कतें महसूस होते हैं, देन वी रियलाइज कि व्हाट आई डिड रॉन्ग इन माय पास्ट लाइफ, इन माय पास्ट टाइम. So my organization is related to that only, because when I was student, when I entered into professional life, I was very less knowledgeable in this particular regards ki how I will survive in professional setup. मैं प्रोफेशनल सेटअप में सर्वाइव कैसे करूंगा. जब मैं उससे छोटा था, when I was in academics, so I was not very much clear about कि how should I proceed with my career, what subject should I choose, how what all options are available in this particular market. And recent surveys also says, even in like my academics already completed 15 years ago, but still current recent surveys I usually see, read and all, like still in India 90% parents and students are aware of only skilled with their own domain, skilled with their professional etiquettes. So these are some points that always hit me, something different in this particular domain. हम क्यों नहीं इस चीज को स्टार्ट करें. लेकिन अब जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, वी आर लिविंग इनटू सर्विस प्रॉन कंट्री. जब आप कुछ स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला थॉट, सबसे कहेगा, दिस इज व्हाट द वेरी फर्स्ट थॉट प्रोसेस केम इन एवरी, किसी और को दिखाना है. Why you want to prove someone else? Why? What to do? What society करना है? You have to do yourself. पहले आप उस चीज, उस ऑरा से बाहर निकलिए. Even if you talk for small story, I just wanted to share that happened with my father. Like
I thought of ki I should have my own startup. I should have, and it is like almost 6 year back story I'm talking about. My organization registered with Government of India in 2020 only, completely in but mood ki mujhe apna startup start karna hai. So that time I like worked on background building and all, क्योंकि see for every business, किसी भी business को start करने के लिए आपको background से, not through funding but through नॉलेज, जो प्रोज एंड कॉन्स है, आपको वो सारी चीजों को देख के बैकग्राउंड बिल्डिंग आपका पूरा स्ट्रांग होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं बेस बिल्डिंग। आप बेस पे काम करते हो, तो उस टाइम पे आई थॉट ऑफ कि कुछ करना है, सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन बेस बिल्डिंग, कि हमारा एक बेस बने। सो दैट टाइम आई क्रिएटेड अ वेबसाइट फॉर माई ओन थॉट प्रोसेस। उस टाइप के टर्म में मैं डेवलप कर चुका था। सो आई सेट with my father that day, like one day I went my home, so I sat together with my father and उनको पूरा वेबसाइट दिखाया कि पापा ये है, ये है, ये है, ये है, this है, that है। He listened everything and then at last question, last point he listened everything and then at the last point he mentioned, बेटा ये बताओ ये किस कंपनी से एफिलिएटेड है, एसोसिएट है, आप किसके लिए काम करोगे और सैलरी कितनी मिलेगी। देन आई रियलाइज कि ये चीजें इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाली है। So then I gave him an idea कि नहीं पापा, I am working there only and all. So now when I entered full fledged into our business, then he realized कि चलो वो अपना business कर रहा है, but still I'm not sure कि he is very much the thing is that, so this was my biggest challenge, कि मैं समाज को इग्नोर कर सकता हूं, बट फैमिली को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। यू कांट इग्नोर योर फैमिली, बट यस, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर आपको कुछ स्टेप्स, कुछ डिसीजंस आपको लेने, कुछ लोगों के अगेंस्ट भी जाता है, एंड दैट यू हैव टू टेक इट। बट उसके लिए बीइंग अ एंटरप्रेन्योर यू मस्ट हैव दोज दोज स्किल्स, वो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, वो चीजें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। when I was young, like still I am young, but to guide when IDU, आज हमारे पास like the team like NCIDE, they are doing very well. Even like I am also functioning for developing entrepreneurs and all, even giving a guidance. But हमारे टाइम में ना उतना करियर काउंसलिंग होता था, ना उस टाइम पे हमें पता था कि करियर काउंसलिंग नाम की भी कोई एक चीज होती है या फिर कोई डोमेन होता है जो कि आपको गाइड कर सके, responsibility. But nowadays we have lots of resources, but still I found कि उन resources का यूज नहीं हो पाता है। क्यों? Because we don't have a guts to take a decision, and that's the reason अभी आज सुबह मैं एक कुछ वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ कंटेंट देख रहा था, then I found beautifully, but not at par. So today morning I have gone through the data monitor India. Like India is still having only 5% of businessmen, entrepreneurs, 5%, total population का 5%, and 95% say, you can say likewise. और उस 95 में सैलरीड भी आ गए, like unemployed भी आ गए, semi employed भी आ गए, only 5% entrepreneurs are there. And another very very important data in world, और वो जो 5% है in
बाकी वो अदर कंट्रीज की का कंपैरिजन करें तो वो 5% बहुत कम है. ब्राजील 17% सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स दे प्रोड्यूस एवरी ईयर. I can say, and another very important data is highest discontinuation rate. That is also India. That is also in India only. Highest discontinuation rate. मतलब highest discontinuation in terms of startup I am talking about. हमारे mind में thought process होता है without having any planning, without having any thought domain, but we don't. फिर वहां पे बहुत सारे other challenges 26 challenges आते हैं 0.4%, one of the highest in world. And सरप्राइजिंगली उसका जो एक बाइफर्केशंस हैं कि डिसकंटिन्यूएशन रेशियो में रीजंस क्या क्या हैं, जिसमें सबसे जो लार्ज स्केल पे है, जो सबसे हैवी लैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब यानी कि आपने प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होके उस चीज को प्लान नहीं किया. दैट्स द रीजन आपका प्रॉफिट मेजरमेंट नहीं है. क्योंकि प्रॉफिट आपका कब आएगा? प्रॉफिट तब आता है जब आप प्रॉपर्ली मार्केट रिसर्च करके, एंड ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि द सोसाइटी वी आर लिविंग इनटू दैट इज कंप्लीटली डायनेमिक नाउअडेज. आप 5 ईयर पहले के सोसाइटल need demand is continuously changing day by day, year by year, decade by decade. So you can't continuously work on same सेम. हमारे पास बहुत लाइव एग्जांपल भी है. नोकिया, एक टाइम पे नोकिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मोबाइल कंपनी, बट वो उसके बाद एंड्रॉयड आया, उसके बाद स्मार्टफोन्स आए, बट नोकिया अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया. और क्या हुआ? नोकिया मार्केट से ही आउट हो गया, एंड मेनी न्यू प्लेयर्स केम इनटू द मार्केट. सो यू नीड टू इनोवेट योर प्रोडक्ट ऑन रेगुलर बेसिस. एंड जब तक आप मार्केट डिमांड को नहीं समझोगे, मार्केट रिसर्च नहीं करोगे, जब तक आप मार्केट के नॉलेज को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते हो. आप जब प्लानिंग ही नहीं होगा तो प्रॉफिट, बिजनेस रन ही नहीं हो पाएगा. जब बिजनेस रन नहीं हो पाएगा तो प्रॉफिट की बात ही हम so 16.9% due to lack of profit and 7% due to financial crisis. Financial crisis, see, lots of startup. एक ये भी मिथ है हमारे माइंड में कि स्टार्टअप रन करने के लिए we need a heavy amount. This is also a kind of myth. There are n number of business, there are n number of concept that don't require a heavy amount, heavy funding. और आज के टाइम में वी हैव अ लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स आल्सो. इवन स्टार्टअप इंडिया इज देयर, इवन रिसेंटली लॉन्च शार्क टैंक इंडिया, even many other, even like team like NCID, they like we are like I'm also part of their mentorship program. So even we and professionals for coping up the real challenges. एंड आप उसमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर दो, उसके बाद आप फंडिंग देखो कि क्या है क्या नहीं. नो, यू कैन डेवलप योर प्रोटोटाइप ऑल्सो. आप प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हैं, आप उसकी स्केलेबिलिटी देख सकते हैं कि वो किस लेवल पे स्केल करेगा. उसके प्रोटोटाइप से आप एक इमेजिनेशन डाल सकते हैं, अपना एक प्रोटोटाइप आप इन्वेस्टर्स के आगे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. अभी नेशनल startup of India, they do conduct every year national startup award. आप being a organization, being like a prototype there, वहां पे बहुत सारे नेटवर्क आपके क्रिएट होंगे. इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू आर डूइंग नेटवर्किंग. सो इट्स नॉट लाइक कि उसके लिए बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत होती है. एक मिनिमम अमाउंट, जब तक आप प्रोटोटाइप, जब तक आप मार्केट टेस्ट कर रहे हो, मार्केट टेस्ट के लिए जो इनिशियल अमाउंट्स हैं
डिपेंड करता है हर एक इंडस्ट्री से रिलेटेड, हर एक इंडस्ट्री का अपना अलग अलग एक मिनिमम रिक्वायर्ड बजट होता है जो कि आप लगाना पड़ेगा, वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। एंड apart from proper business plan bana ke, you can get lots of funding from various other investors and various other people those are interested into. So it's not like कि आपको स्टार्ट करने के लिए करोड़ 2 करोड़ या 10 लाख 20 लाख 50 लाख आपको फंडिंग चाहिए ही चाहिए। नाउ फ्रेंचाइज बिजनेस क्या होता है? अनंत है। फ्रेंचाइज बिजनेस इज लाइक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के साथ आप कोलैबोरेट करके, आप एसोसिएट करके आप उसके ऑपरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। उसमें तो आपके इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होते हैं, उसमें उसमें फंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें। एंड उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑलवेज हायर देन एनी न्यू हायर देन टू स्टार्ट एनी न्यू वेंचर। सो your choice, own brand, or how you wanted to create any franchise business, how you wanted to go with any franchise business, it's all about your choice. But ये सब तो हम बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप डू यू रेडी विद बॉदरिंग ऑफ अदर्स? आर यू स्टिल बॉदरिंग कि दूसरे का थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या कह रहा है उस बिजनेस के बारे में? क्या वो उसके लिए क्या वो उस जो भी वट एवर आई वॉन्टेड टू स्टार्ट, क्या वो उस चीज के लिए हमें प्रोत्साहित करेगा, इंकरेज करेगा? These are the things are very silly things. If you wanted to do something, you have to do. आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। सो थोड़ा सा एक आइडिया लाइक बीइंग एंटरप्रेन्योर, हम लोग ये सब चीजें हमेशा जानते रहते हैं कि बीइंग एंटरप्रेन्योर ये स्किल्स होना चाहिए, वो स्किल्स होना चाहिए। सो लाइक आई एम जस्ट शेयरिंग यू सम ऑफ माई स्टोरी during my I faced, and thoroughly I will give you a time to time skill set also, ki what skill set you must have. See, professionally, like I started my career with management guy. So when I started a job in one of the I started my job in banking sector initially, but एक इंडिविजुअल का अपना गोल होता है, थॉट प्रोसेस होता है, एंड आई एम अ काइंड ऑफ इंडिविजुअल दैट लव टू लर्न। मैं हमेशा से ही एक होता है कि बच्चे का दिमाग दौड़ते रहता है इधर उधर, चीजों को समझना, चीजों को जानना, नई चीजों को टेस्ट करना, नई चीजों को समझना। सो आई वॉज इन कंटिन्यूअस थ्रू आउट माई लाइफ। So when I started my job in banking sector, I thought कि यार प्रोसेस बहुत सिंपल, एक ही चीज है, आप एक ही चीज प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। So I started job with lots of education companies and all. I realized कि when I was student and modern day students, कहानी बहुत ज्यादा डिफर नहीं है। Fine, I started, I thought कि चलो हम दिस इज रिलेटेड टू आइडियाज बहुत एग्जिस्टिंग थे, और बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी वर्क कर रहे थे इस इंडस्ट्री में, एंड गुड फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं, देन वी विल चेक कि करना क्या है। सो जो सबसे पहला चैलेंज था, हाउ टू स्टार्ट, क्योंकि दैट टाइम कोई था नहीं गाइड करने वाला कि करना कैसे है। देन I got to IELTS and all। एक पॉइंट है, सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो हमें स्टार्ट करना होता है, टू क्रिएट, जिससे आप ये कर सकते हो कि आप अपनी अपनी
वही बिकता है, प्रेजेंस मार्केट को दिखा सकता है। दैट्स द रीजन बिग ब्रांड्स आर प्रमोटिंग एट वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। Various social started developing websites through connection with other people, through consultants, website developers, like and all। कि आपको हर चीज में एक्सपर्टीज होना है, बट यू मस्ट हैव अ नॉलेज रिगार्डिंग दीज थिंग्स। सो फर्स्ट चैलेंज मेरे साथ ये था कि वेबसाइट डेवलपिंग तो कर रहे हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि आई वाज नॉट फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, बट particular domain, then I realized ki see, I can't be too much dependent on every, and those entrepreneurs must possess, must be aware of चीजों का एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए कि आपको करना क्या क्या है, और एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि किस तरीके से करना है। और ये ऐसा नहीं है कि आप जब स्टैब्लिश कर रहे हो उसी टाइम पे आपको इस चीज की जरूरत इन थ्रू आउट ऑफ योर सक्सेसफुल रन ऑफ योर बिजनेस। ये आपको जब तक बिजनेस आप रन कर रहे हो, लाइफ टाइम कर रहे हो, आपको लाइफ टाइम इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उस चीज आज मैं किसी और चीज को सीख रहा हूं क्योंकि वो मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट do well in this particular market. So that was my first challenge, and I overcome with that. But anyway, we like I proceeded further. Then during the sun another good people के साथ रहोगे तो आपका थॉट प्रोसेस भी गुड रहता है। यदि आप इनोवेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी थॉट प्रोसेस इनोवेटिव डेवलप होता है। और यदि लाइक नॉर्मल लाइक का ग्रुप होगा, जैसा आपका सर्कल होगा, वैसा आपका माइंडसेट क्रिएट होता है। सो दिस इज वेरी वो दैट डिफाइंस योर pathways of your startup, whether in successful direction or very important. So I started building a good relationship, I started building my networking before establishment of my starter। कोशिश कर रहा था कि सर दिस इज माय मैम, सर और मैम दिस इज द प्रोजेक्शन, कि मैं इस चीज को मैं इसको इस वे में आगे चलने की कोशिश करने वाला हूं, एंड फॉर दैट नाउ योर हेल्प नीडेड, योर key network for running successful entrepreneur organization or startup, or being a successful entrepreneur। Another thing that is very important, so of course networking create hua, then research oriented individual का जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो ओपन माइंडेडनेस इन द सेंस ऑफ कि आप कोई भी चीज आप मार्केट को प्रेजेंट कर रहे हैं, so you need to understand कि what pros and cons people you will get a kind of feedbacks from also। So what I did in 2019, so till then all market research I did, till then all networking I did, I knew कि जो डोमेन में लेके आगे चल रहा हूँ, जो डोमेन में आगे लेके चल रहा हूँ उसमें डेफिनेटली स्कोप बहुत था, क्योंकि मैंने रहा था। सो डेफिनेटली मुझे इतना पता था कि मार्केट में बहुत ज्यादा स्कोप है, बट
को प्रॉपर प्लानिंग वे में लेके जाना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लान्ड वे में लेके जाना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रैटेजिक वे में लेके जाना, दैट was very pilot testing in 2019 and started that time I started with training programs as well. And in career counseling I started training programs and started giving career counseling under banner of my own. I was organized, very I was overwhelmed with end customers. एंड देन आई थॉट ऑफ कि यार इसमें हम लोग जो हमें आज तक नहीं मिला है या फिर जो मार्केट ने नहीं दिया है उस चीज को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके इसको open mindedness. This is the flexibility of being entrepreneur कि आप time to time, और it was not related to only pilot testing. आज भी as OP sir mentioned कि like time to time in various other things. So this thing this thing will help you to sustain into a market, into a particular market, into a particular आप आगे उस आइडिया को, इस स्टार्टअप को आप लेके जा पाएंगे एंड यू विल able to generate a kind of revenues also. So flexible and also don't be frustrated with your failures as well. Sometimes हम सोचते हैं कि यार मुझे आइडिया ही नहीं है करना क्या है, from where to start. क्या होते हैं, आप एक बार स्टार्ट तो करो, आइडिया अपने आप आता चला जाएगा. जब तक आप टेस्टिंग नहीं करोगे, पायलट टेस्टिंग नहीं करोगे, तब तक आपको वो क्या उसमें डेवलपमेंट्स लाने हैं. And when I tested that particular thing, pilot testing, I did that in 2019. Then I thought of कि नहीं, इसमें स्केलेबिलिटी है. फाइट करना पड़ेगा क्योंकि बड़े बड़े शार्क्स ऑलरेडी मार्केट में हैं. सो बट यस, आई वाज रेडी. सो दैट वाज the way we need to understand. Being an entrepreneur, you need to be passionate about your dream. You need to be passionate about your goal. And also क्योंकि विदाउट प्लानिंग आप किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो. आपको 10 डायरेक्शन दिखेंगे यदि आप बिना प्लानिंग के गए. अदरवाइज इफ यू विल गो विथ प्रॉपर प्लानिंग, के बाद ये करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा हर चीज का. बट यदि प्लानिंग नहीं है, यू कांट मैनेज. Very good in planning the process also to run your own startup. As in say at same time आपको अपने मार्केट का नॉलेज भी होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन क्या क्या चीजें आप मार्केट में इंप्लीमेंट कर सकते हो. क्योंकि सी द थिंग इज दैट व्हेन यू स्टार्ट योर ओन सेटअप, व्हेन यू स्टार्ट योर ओन कंपनी, एंड किया अपने कंपनी में इन स्टार्ट ड्यूरिंग स्टार्टिंग टाइम, और वही आप कैरी फॉरवर्ड करोगे आने वाले 50 साल 100 साल और थ्रू आउट लाइफ. नो, ऐसा नहीं कर सकते हो. आप बहुत सारी कंपनीज को देखोगे कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें मॉडिफिकेशन करते जाते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ मार्केट नॉलेज, बिकॉज ऑफ मार्केट डिमांड, बिकॉज ऑफ सोसाइटल डिमांड. सोसाइटल डिमांड. So market knowledge, planning and passion, these are the things key role in success of your startup. Then for me like 13th January 2020 I
I can term myself as a registered entrepreneur of corporate affairs then at 20 at 13th January 2020. But now अभी भी ऐसा नहीं था कि ना I was in comfortable zone. Of course, for funding me because I was aware of it. यदि I can plan properly, so I can generate a good revenue from this particular market. But real challenge, 3 month older company, badly hit आते में रहेंगे आपके पास. बट जो भी sorry, if you consider those moments, those problems as a problem, you can't overcome those situations. But if you as a challenge, then you have a lots of idea to deal with it. आप फिर उसके लिए brainstorm करते हो. So कोई भी problem, कोई भी situation है, आप एंटरप्रेन्योर हो या नहीं हो, ये सक्सेस टुवर्ड्स द लाइफ की भी बात मैं करूं तो यू कांट ट्रीट इट एज अ प्रॉब्लम, कंसीडर इट एज अ चैलेंज. और जब आप उसको मेहनत से आप उस पर वर्क करते हो, डबल मेहनत से, एंड दैट विल इनहांस your creativity part also, creativity skills, क्योंकि entrepreneur can't be separated by creativity and risk taking ability. आपको कहीं ना कहीं you can't play safe game because we don't have an idea कि जब हम आएगा, क्योंकि पेंडेमिक ने ये हमें सिखाया कि किस तरीके से इन सिचुएशंस को how I will get a kind of business. अब क्या होगा, because that how I can promote myself, how I need to proceed further. But again, I thought of कि कुछ तो करना पड़ेगा. ये एक जो जिसको हम लोग हिंदी में जिद बोलते हैं, राइट, डेडिकेशन इसको हम लोग कह सकते हैं. जब तक ये थॉट प्रोसेस आपके माइंड में नहीं रहे इस पर्टिकुलर डोमेन, you need to fight with various challenges. You need to overcome with it. You know, with the trained, you need to think a little bit out of the box. आपको अपने out of the box सोचना पड़ेगा. और जब बिल्कुल आप रन नहीं कर सकते, then I thought of. And also one thing that is very important, then I will proceed further. इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका कोई भी बिजनेस customer centric. You need to understand their requirement time to time, and that I focused since long when I was into the planning phase. This particular pandemic, so when I started my venture, pandemic hit, then I continuously discuss with my customers की what you thought of, एक kind of market survey आप उसको कह सकते हैं कि इसमें और हम क्या add on कर सकते हैं. during this restricted हुआ था उस टाइम पे, people scared कि जॉब चली जाए ना जाए, या फिर पैसा इन्वेस्ट करूं कहीं, या फिर पैसा कहीं लगाऊं या ना लगाऊं.
So that was the big challenge for any startup. And closed during that particular pandemic. But my only thought was, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसको stop नहीं करना, because this was my dream project. और सबसे important point था, और कभी भी when you are an entrepreneur, when you have a planning to social empowerment, आपके बिजनेस से क्या जनरेट हो रहा है, that will be one of the biggest strength. लोगों को हम ट्रेन करेंगे, उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जोड़ेंगे, they should not treated as a client, they should not treated as a customer, they should be treated as a family. Because people blanked with the mind कि these challenges को कैसे ओवरकम करना है, एंड इन सब चीजों के लिए आप आई डिड कि जब जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनको डोंट ट्रीट देम एज अ क्लाइंट, ट्रीट देम एज अ फैमिली पर्सन. एंड even after completion of our monetary के बाद भी हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप अपने रियल लाइफ के चैलेंजेस आप शेयर कर सकते. सो आई क्रिएटेड अ काइंड ऑफ alumni platform, and they do discuss their real challenges. We also give it a kind of daily routine discussion points कि उसमें हम लोग जो रियल चैलेंजेस जो हो रहे हैं उसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं. सो दैट startup. And surprisingly, during that particular pandemic, like I got business through referral. So like जो मेरा एक चैलेंज था, जो मेरा एक वो प्रॉब्लम था कि अब इस पेंडेमिक ये डील करेंगे एंड ऑल. सो मेरा 90% जो एक हम कहते हैं ना बोझ, वो हल्का हो गया कि एंड आई डिड वेरी वेल. एंड ड्यूरिंग दैट developed my own software as well, invested so many amount during that particular thing, just because of those plannings and those process only. So it is not like कि होनी चाहिए, सेटअप होना चाहिए. हर एक बिजनेस का अपना अपना एक domain you are opting, what field you are opting, what product you are opting. Accordingly you can decide, accordingly you can check कि उसमें स्टेप क्या होने चाहिए, कितने इनिशियल फंडिंग चाहिए होते हैं, ये सारी चीजों को आप ओवरकम कर सकते हैं. एंड वन लास्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेंशन इन दिस पर्टिकुलर थिंग, आप मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, दे कंप्लीटेड देयर डिग्री, दे कंप्लीटेड देयर थिंग, एंड देन दैट्स इट. मुझे अब कुछ नहीं सीखना है. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई कंप्लीटेड माय मैनेजमेंट, आई वाज seen the societal structure, societal challenges as well, and उसको डील करना था मुझे, उसको like I need to enter into psychology industry. So during my job in the sense कि जॉब को कंटिन्यू रख I'm doing my PhD also, and my work is still going on. So it's not like कि आपने एक बार कोई भी चीज सीख लिया या फिर कोई उसके अपग्रेड होने की जरूरत नहीं है. की मार्केट कीप्स चेंजिंग, ट्रेंड कीप्स चेंजिंग. आपको पेंडेमिक जैसे आपको लाइफ टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस आते रहेंगे, बट दोज नॉलेज अपग्रेड मार्केट को चाहिए क्या,
and those learning process only will help you to survive in this particular tough market, survive into this particular complex market, I can say, and highly competitive market. Very important. And during these 2 years, I successfully built a family of 250 people, successfully build 250 people of CUC family, craft your career family. Among them, I so see, the thing is that whatever you are doing in this particular planning and market, that's the reason currently we have seen lots of entrepreneurship development training program. NCM's ID team also conducted one workshop that was seed, and fortunate enough like I was the part of that. I had I already had a startup, so it's not like लर्निंग आपको लेते रहना चाहिए, कोई बात नहीं। आप यदि लाख रुपए अर्न करने की सोच रहे हो तो 10,000 खर्च करने में कुछ नहीं जाता है, बट उस कंटिन्यूस प्रोसेस में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, सक्सेस कांट कम इजिली। दिस इज ऑल्सो अनदर लेवल। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता ही है, उसके लिए आपको प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा। खाना है आप इजिली लाइक फीड करना है, नो नॉट एट ऑल। तो जो मुझे लगा, ये सब चीजें तो बाद की प्रोसेस रहती हैं, सारी चीजें हमने जो डिस्कस की, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट है कि हम कब कैसे स्टार्ट करें। क्या मैं स्टार्ट करूं, क्या मैं यदि कोई भी चीज स्टार्ट करूंगा तो क्या जो मुझे सैलरी में क्या वो स्टार्टअप में भी वो 30,000 मिलेगा हर महीने या नहीं, क्योंकि आई टॉक्ड सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, सो मेनी ऑफ माय कलीग्स और एनी और सम बडिंग एंटरप्रेन्योर्स और सम दोज आर प्लानिंग फॉर दैट। सो उनका सबसे पर महीने कितने हो जाएगी। बीइंग एंटरप्रेन्योर आप पर महीने की अर्निंग की बात कर रहे हैं, so I don't think so this mindset will work as an entrepreneur. You need to think longer run मार्केट प्रॉपर, क्योंकि मार्केट ये टर्नओवर हो रहा है तो अगले महीने में भी इट विल बी फ्लक्चुएटेड, एंड दैट आई एक्सपीरियंस्ड आल्सो। सो इट कांट बी you need to have a patience also, you need to have that kind of risk taking ability, तभी आप उस चीज को आप 50,000 को आप 10 लाख रुपए तक लेके जा सकते हो, 50,000 तक आगे पहुंच सकते हो। अदरवाइज बीइंग एंटरप्रेन्योर यू कैन अर्न lakhs, crores and start. You need to leave your those secured mindset. Let's do it, then we will change और हम मार्केट सिचुएशन के हिसाब से उसको ओवरकम करेंगे, बट फॉर दैट वी नीड टू स्टार्ट, वी नीड टू टेक अ डिसीजन। दिस इज व्हाट द मेन थिंग, डिसीजन मेकिंग skill is always a different non-decision maker. So over to you, Momita ma'am. Chandan, I would you on that today. मैं एक मेरे अंदर एक बिलीफ हुआ है कि yours. So thank you very much. And now I would request our participants who are here to and before that I'd like to invite Dr. O.P. Sharma for his comments. Chandan,
excellent how you have experienced, and I hope it will be motivating. Thank you very much and wish you all the best for your entire journey, and hope that you will be. I will say only these words. Let us listen to our participants and students also. Dr. Nayak, would you like to say something? Namaskar, Sarma Saab was very attentively listening to what you were saying. I was telling my colleagues sitting in front of me कि देखो हमारे स्टूडेंट कहाँ तक पहुंच गए. I am really ideal the role model for the IGNOU innovators. और I can see a very bright future for you. आपके आगे आवाज के proper आ रही है सर, proper आ रही है. So God bless you, but I can see a very bright future for you. You are going to be very successful entrepreneur क्योंकि देखिए, there is a very beautiful line in English. When the going gets tough, the tough get going. And the problems in life, they keep on increasing. Only it is the people with resilience and people who are, they go ahead. बाकी सब पीछे रह जाते हैं क्योंकि कोरोना टाइम पे आपने उसको झेल के आगे भी उसको बढ़ाया. So God bless you. I can see a very bright कि बार बार बच्चों के सामने चंदन जी को बुलाया जाए. I am really inspired by your story. I will call you one day for my students in Patna. Thank you very much. Sir, from Bihar itself, right? So the kind of societal structure we have seen during my time. अभी सुबह में भी एक मैं इंग्लिश में story times makes hard time creates strong people. Strong people creates easy times. Easy time creates weak people, and this is again life. And if we like definitely हम लोग की जो परवरिश हुई है, we have seen lots of hard times, lots of and kind of mindset given like developed by myself throughout the situation what I handled and all. So थैंक यू डॉक्टर नायक. यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे हैं कुछ करना स्टार्टअप का. वांट टू आस्क एनीथिंग और कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, कोई कमेंट देना चाहते हैं. उनसे पहले मैं डॉक्टर असद निजाम जी हैं. वुड यू लाइक? Okay, I will. Would you like to say anything? Yeah, thank you, Dr. Momita. Thank you so much for inviting. Really, it's a very excellent. जी कॉलेज से भी है ना? Just नहीं ना? Just I left that time the meeting due to some sentence for you. We are so proud of for you. Really. So we have to think
the how to motivate our students, and in headquarters also we are planning to do something, and we'll call you. Thank you so much and all the best. Thank you, Dr. Ranjita. और किसी को कुछ पूछना तो listen. So thank you, Dr. Nizam. And anybody else? और किसी को कुछ पूछना है? So if we do end this session today, I thank all the directors and heads, regional directors, faculty members, and academics of IGNOU. Sharma, head of the Public Information Unit, for providing NCID with the Facebook Live platform and ensuring the smooth conduct of the session with Director NCID and my colleagues, Dr. Jyotsna Dikshit and Dr. Sujata Santosh, for their untiring support. I thank Mr. Pawan Kumar for extending his assistance in the smooth conduct of the session. Hope to see you next